मु बहुत दिन आगु है ए बंद हवा आगु मु तुम 5टा क्वेश्चन देइছিলি खाली मोना ही अटेंड करछि पछे गलत हो पछे अटेंड तो करछि पठेइछि ए बाकी आउ तो के पठेलन रे तब से माने क्वेश्चन भी उठौन सर होउनी कि होउची कि करूची कोन बोली हैं सर सॉरी सर दे देवी काली भूल ही गई थी। Okay, start kariba. So in this session we will learn to implement character stream classes, implement object serialization, use thread in Java, identify the life cycle of thread, create thread. Right? इस सेशन रे हमें character stream कौन तार क्लासेस कौन केमिति ताको यूज करा जे से विषय जानिबा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन विषय जानिबा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन कौन ताको केमिति इंप्लीमेंट करा जाय से विषय जानिबा जावा रे थ्रेड केमती यूज करा जाए से विषय जानिबा देन लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड थ्रेड रो लाइफ साइकिल केते जाय थाए हमें ताको केमती इंप्लीमेंटेशन करू केमिति थ्रेड टाको क्रिएट करू से सब विषय जानिबा कारण थ्रेड होची मैंडेटरी पार्ट एटा मन रखथाओ थ्रेड होची तमर मैंडेटरी पार्ट यदि थ्रेड जदि न थांता ताले प्रोग्राम स्टार्ट ही न प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ही करना कारण थ्रेड अछि बोली प्रोग्राम भीतर मु सीक्वेंशियली मु एग्जीक्यूशन करूची थ्रेड अछि बोली मते सीक्वेंशियली आउटपुट शो करू थ्रेड अछि बोली मते सीक्वेंशियली मते इंस्ट्रक्शन दोची कोठी एग्जीक्यूट प्रथम करिवार अछि कोठी एग्जीक्यूट पर करिवार अछि थ्रेड अछि बोली मते मोर सॉफ्टवेयर रो इंप्लीमेंटेशन ता आसुची थ्रेड अछि बोली आमे निजर सॉफ्टवेयर टाकू यूज करू परछे अलगा सोर्स से अलगा प्लेटफॉर्म बुझला Yes sir. ओके so using reader आपनको वॉइस क्लियर आसु मो वॉइस क्लियर आसुनी गोटे मिनट रो गोटे मिनट रो गोटे मिनट रो मु ऊपर जाउची होल्ड कर ए तो चाटा अछि पडिबो पडी जीवो देख गोटे मिनट मो आवाज क्लियर आछि यस सर इसिदा इसिदा असना कटि गलानी
मैंने अच्छी से वास्ता है again. Okay, using the reader class, the java.io.reader class is an abstract class that provides the various methods for reading the Unicode character that form data from input devices such as hard disk, keyboard, and memory. The following figure shows the reader class hierarchy. That is, reader class has divided into so many parts. That is, before buffer reader, string reader, input stream reader, pipette reader, filter reader, character array reader. These are the reader class. Reader class means what? कि मते जदि मोर इंस्ट्रक्शन जदि मते इनपुट दबार अछि मोर इंस्ट्रक्शन जदि मते जदि सिस्टम को जदि इनपुट दबार अछि राइट थ्रू द कोड कहा थ्रू देबी मु कीबोर्ड थ्रू दे परिबी हार्ड डिस्क थ्रू दे परिबी मेमोरी थ्रू दे परिबी ए जो जिंसटा जेता मु जेता इनपुट ता दउची ସେଇଟା ମୋର ରିଡର ହିସାବରେ ମୋର ଟ୍ରିଟ୍ କରେ ଯେମିତି ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଟାକୁ ମୁଁ ଓପେନ କରି ସେଇଟା ଆଇଦର ଆମେ ଯେମିତି ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଛେ ଯେମିତି ଜାଭାରେ ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆଇଦର ମୋର ମାନେ ରିଡିଂ ପ୍ରପୋଜ ପାଇଁ ତାକୁ ଓପେନ କରିପାରିବି या फिर ରାଇଟିଂ ପ୍ରପୋଜ ପାଇଁ ତାକୁ ଓପେନ କରିପାରିବି ରିଡିଂ ପ୍ରପୋଜ ପାଇଁ ଓପେନ ଯଦି କରିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋର କୋଉ ହିସାବରେ ରିଡିଂ ହବା ଦରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ ରିଡିଂ ହବା ଦରକାର कि बफर वाइज रीडिंग हवा दरकार तो सेमिति जावा रे रीडर क्लास रो मीनिंग कोन कि मोर जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो इनपुट ता देबी एंड जो आउटपुट ता आसीबी सेटा रीडर क्लास रे को हिसाब रे मोर ट्रीट करबा आइदर बफर रीडर या फिर स्ट्रिंग रीडर या फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर या फिर पेपेट रीडर या फिर फिल्टर रीडर या फिर कैरेक्टर एरे रीडर राइट तो ए गुडा होची मोर रीडर क्लास रो इंटरफेस गुडा बुझला क्लियर Sir, हाँ yes, sir. लपा बुझलु Yes, sir. Yes, sir. okay the following table lists the method of the reader class int read a single character and returns an integer value of the character returns 1 if the end of the file is encountered the int read ta parameter bhitar jodi mu character buffer mu data type jodi parameter jodi pass karchi it reads character into the character array buffer and returns the actual number of character that are successfully returns 1 if the end of a file is encountered abstract int read character buffer int offset int length जदि मु दउची ताले गोटे स्पेसिफिक लेंथ जाय मु ताको रीड कर परि जेमति तमरो जाय ना नथाय गोटे गोटे मोर स्ट्रिंग रे कोन कोन थाय कि आमे जो डाटा टाइप जो पास कुची या फिर जो डाटा आमे ये रीड करूचे सेटा मु दे देथियो कि 250 कैरेक्टर जाय तमे रीड कर परिबो या फिर 180 कैरेक्टर पई तमे रीड कर परिबो ए जो जिंसटा एटा कोन एटा होची मु लेंथ स्पेसिफाई करछि एति कि जाय मते रीड करिवार अछि ता पई तुमको ए फंक्शन टा यूज करबा पड़िबो एंता पैरामीटर भितरे एमति पास करबा पड़िबो ऑफसेट कोन ऑफसेट होची तमरो पोजीशन को पोजीशन मु रीड करबी जेंति हम सी प्लस से पढ़छ ऑफसेट 0 माने बिगिनिंग पोजीशन रु 1 माने मोर करंट पोजीशन रु 2 माने मोर एंड ऑफ पोजीशन राइट बुझला abstract method close the हमरो स्क्रीन कोन शो होनस लागी Okay. okay abstract void close the stream right जदि मते स्ट्रीम टा क्लोज करबार अछि ताले क्लोज मेथड यूज करबा then void mark int num place a mark at the current character in the stream that remains valid until the number of character that are specified by the number of parameter are read void reset the pointer to the previously set mark long skip the number of characters specified by the number of parameter
and returns the number of characters that are skipped, right? The file reader class is used for adding for reading character from a file, but it does not define any method of its own. The buffer reader stream reads the text from a character input stream and attaches a buffer to the character input stream, right? File reader file भितर character individual character को read करिया ପାଇଁ तम file reader use करा जाए. Buffer reader buffer stream भितर जदि मते text गुडा को retrieve करा जाए, text गुडा को read करा जाए ताले buffer reader use करा जाए. दीटा भितर difference अछि. File भितर character read करिवो, buffer भितर text read करिवो, माने collection of character, right? Using write class, the java.io.writer class is an abstract class that provides various methods for writing the Unicode character data to the output device such as hard disk and monitor. The following figure shows the writer class hierarchy: writer class, buffer writer, string writer, output stream writer, prepare writer, filter writer, character array writer, then output stream writer room more file writer class more derived. The writer class रे एवडा होची तार मेथड void writer sorry void write ता parameter भितरे से integer type गोटे variable declare अछि. ता description होची कोन write a character into the character output stream. The written character is present in the 16 low order bits of the given ch integer and 16 high order bits are ignored. Void write ता भितर हमर buffer character declare करछि, array को declare करछि. Write a character array into the character output stream. Abstract void write character buffer int offset int length जेमते हमर मोर reader class जेमते specific length जाए आ को position रो मोर से read करिवो सेमिति एठी भी specific length जाए तमे write कर परिबो and को position रो तमे ताको write कर परिबो तार method तमर दिया छि. Abstract void close the character output stream. Void write string str, write a string specified by the str parameter to the character output stream. Void close the output buffer. The file writer class, the file following table list the constructors of the file writer class. The file writer constructor, file writer string, then file name. Its description is create an object of the file writer class where file name specify the name of the object. File writer string file name boolean append data. Our description kon, our meaning kon. Creates an object of the file writer class. The file name parameter specify the name of the object. The append data parameter is a boolean variable that indicates whether to append the data to the specified file, when end of the data to the specified the file. File writer file object creates a file writer class object where the file object parameter is an object of the file class, right? The buffer read writer class, the buffer writer class extend the writer class and write text to a character output stream. Print writer class, the print writer class extend the writer class and write the formatted character to the character output stream. This class defines the various methods such as print method and println method provide the formatted output. Print method और println method भितर difference कोन? Print method horizontally print करी, एटा मन रखियो. हला आमे जो जावा रे एता प्रोग्राम करूथले सेतेबेले आमे ये करथले ना पिरामिड टाइप रो प्रोग्राम गुडा करथले ना मोना हाफ पिरामिड स्टार रो राइट नंबर एसो पिरामिड करथले तो सेतेबेले आमे प्रिंट आउ प्रिंटलन नै कि ताको यूज कर. प्रिंट मेथड होची यूज करा जाए हॉरिजॉन्टली लाइन को प्रिंट करिया. हॉरिजॉन्टल लाइन जेंति धर मोर
मोर आसीबो हेलो वर्ल्ड मोर हॉरिजॉन्टल आसीबो हेलो वर्ल्ड एटा होची प्रिंट रो काम प्रिंटलन रो काम कोन प्रिंटल रो काम होची तार पैरामीटर भीतर हम जहां भी पास करबा से स्ट्रिंग टा पास से शो करिवो शो कला पर कर्सर तळु पळास न्यू लाइन को पळास एटा होची प्रिंटलन रो फंक्शन प्रिंट रो कोन प्रिंट रो हेलो वर्ल्ड धर सपोज मु तार पैरामीटर भीतर डबल कोट्स भीतर देली हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कला कर्सर ता साइड रे ब्लिंक बट प्रिंटलन कोन हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करिवो डिस्प्ले कर सारा पर कर्सर ता ठीक न्यू लाइन को तार पळास माने तळ लाइन को पळास एटा होची प्रिंट और प्रिंटलन भीतर डिफरेंस बुझला लक्ष्मी इसीदा Yes, sir. एटा होची मोर प्रिंट और प्रिंटलन भीतर डिफरेंस इसीदा घरे अछि फिर भी एथर कोन नेटवर्क प्रॉब्लम होची The following table lists the constructor of the print writer class. Print writer is output stream, O stream, constructs an object of the print writer class from the output stream, object of the output stream class, print writer, output stream, O stream, boolean, autoflush, construct an object of the print writer class from the output stream object of the output stream class. If the value of the autoflush parameter is true, then the println method flush the output buffer. Right? Print writer write out writer boolean autoflush constructs an object of the print writer class where output writer is an object of the character output stream. If the value of the autoflush parameter is true, then the println method flushes the output buffer. The following table lists the method of the print writer class: void print boolean b, print a boolean value; void print int b, print an integer value; void print character b, print an array of character; void print object obj, print an object; void println, terminate the current line by the placing the new line separator string; void println, print a boolean value and then terminate the current line. Serialization object, serializing object. Serializing object is the process of writing object to a file. When an object is serialized, its state and other attributes are converted into an order series of bytes. This byte series can be written into stream. Interface and classes that support serialization are the serializable interface, the object input stream class, the object output stream class. Right? एटा होची मोर serialization object मोर. तो serializing object रो meaning कोन serializing object रे मोर processing टा मोर serialize हबो. Processing टा मोर sequentially access करिया पे मोर serializable object मोर create करा जिवो. Right? तो ए जो serialization जो object टा मोर जो आसबो ता पई मते serializable interface, object input interface stream class and object output stream class mate use kariba ko pade. Serializable interface is used for serializing object in Java and does not define any method. An object that is saved and restored by the serialization process must implement the serializable interface, right? Using the object output stream class for input output operation, the object output stream class extends the output stream class and implement the object output interface. The following table lists the method of the object output stream class are public void write object, object tara pass kala throw IO expression, write the object obj object to the object output stream, public void flows through the IO expression, ensure that the data stored in the buffer is written to a file to which the stream is connected, public void close
throws IO accession, close the stream and realizes all the resource occupied by the stream, right? आज ये था राइट एटा हमें स्टार्ट करबा मंडे बुझला आउ आज मु आउ पांचटा क्वेश्चन मु प्रोवाइड माने सेंड करूची से प्रीवियस वाला भी करो राइट सेटा जदी आसीबनी तो मते कहिवो माने पचरियो मते एंड मु आज आउ नुआ पांचटा नुआ पठाउची राइट बुझला Yes, sir. लक्ष्मी इसिता इसितार नेटवर्क प्रॉब्लम ओके तो मंडे पुणी 4:30 रे हमें मीट करबा मु एबे पांचटा क्वेश्चन पठाउची तो मंडे सुधा मते पठेबो आंसर दे हैला किंतु करो Okay. हैला ओके थैंक यू Thank you, sir.